Morning, dear children. Today we will start our Unit 2, the bird talk. This is the first poem of Unit 2. In this poem, two birds are talking. This is the male bird and this is the female bird. Just like a boy or a girl, this bird is male and this bird is female. It is Robin and it is Jay. It is Robin bird and it is Jay. Do you think birds find people funny? क्या आपको लगता है कि birds भी लोगों को funny समझती हैं? Let's listen to what the Robin and the Jay have to say. चलिए हम देखते हैं और सुनते हैं कि Robin and Jay, it's Robin and it's Jay. Robin और Jay क्या कहना चाहते हैं? This is Robin and this is Jay. The title of the poem is Bird Talk. Bird Talk. चिड़ियों की बातें. Think मतलब सोचो, सोचना. Think, said the Robin. Think, said the Jay. रॉबिन ने कहा सोचो, जे ने भी कहा सोचो. सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. सिटिंग मतलब बैठना, गार्डन मतलब बगीचा, टॉकिंग वन डे एक दिन वो बात कर रहे हैं. अब बर्ड्स आपने देखा होगा कभी नीचे बैठती हैं ज़मीन में, कभी दे सिट ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज एंड दीज बोथ बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द branches of the trees. And the robin is saying, think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. वो दोनों आपस में बैठ के बातें कर रही हैं और कह रही हैं सोचो. रॉबिन भी कह रहा है सोचो और जे भी कह रही है सोचो. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. वो क्या सोच रहे हैं? वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं. हम ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के बारे में सोच रहे हैं. कह रहे हैं कि वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं वो. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो. वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं. दे डोंट हैव फैदर्स. फैदर्स मतलब इनके पंख. ये देखिए, ये चिड़ियों के पंख होते हैं, बर्ड्स के फैदर्स होते हैं जिनसे वो उड़ते हैं. एट ऑल यू नो. वो कह रहे हैं कि डोंट, पीपल डोंट हैव फैदर्स. पीपल लोगों के पास, इंसानों के पास फैदर्स पंख तो है नहीं. हाउ दे ग्रो. वो बढ़ते कैसे हैं? आपने देखा होगा कि जब बर्ड्स ग्रो करती हैं तो उनके सबसे पहले विंग्स आते हैं, फैदर्स आते हैं. बाय द विद देयर विंग्स एंड फैदर्स दे फ्लाई इन द स्काई. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They are talking to each other and saying the people don't have feathers. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. They are saying, they are talking to each other and saying they don't eat beetles. वो कीड़े मकोड़े नहीं खाती हैं. beetles मतलब कीड़े मकोड़े. They don't grow wings. उनके पंख भी नहीं होते हैं. They don't like sitting on wires and things. और उनको wires यानी तारों पे बैठना और चीज़ों पे बैठना भी बढ़िया नहीं लगता है. वो ना तो तारों में बैठते हैं ना थिंग्स में बैठते हैं. द बर्ड्स आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग. दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स अराउंड देयर. थिंक, सेड द रॉबिन. थिंक, सेड द जे. आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे. एंड दे आर सेइंग कि द पीपल आर वेरी फनी बिकॉज दे डोंट हैव फैदर्स. They don't grow wings. They don't eat beetles. They don't sit on wires and things. They are very different from us. That birds are saying the people are very different from us. That's why they are making fun of people. They are making fun of them.
So the jay and the robin are talking about human beings. They wonder that people don't grow feathers, they don't grow wings, even they don't eat insects, grains, etc. And they don't like to sit on wires, trees, branches, on the back of animals, and they are finding the people very funny. This poem is written by Aline Fisher. The poem is written by the poet Aline Fisher. And the title of the poem is Bird Talks. So children, you have to learn this poem and write in your notebook and draw the pictures of Jay and Robin. Once again, we recite this poem. Things said the robin, things said the jay, sitting in the garden talking one day. Things said the robin, things said the jay, sitting in the garden talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. Things said the robin, things said the jay. Aren't people funny to be that way? Thank you, children. That's all for today. Write this poem, learn this poem, and draw the pictures of Robin and Jay. Thank you, children.